Our story takes us to the northwest of Maharashtra, to the hilly regions of Nandurbar. Considered one of the most backward districts in the country, this land is home to Adivasi communities. 2003 में जब हमने नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट को चूज़ किया तो मित्रा के विजन में ये कि हम लोग जो काम करेंगे वो गरीब में से गरीब आदमी के साथ करेंगे. The tribals here face a range of complex issues. Many are landless, while others have extremely small land holdings. The area is also characterized by depleting natural resources and low land productivity. Living in isolation, these communities have little access to information and modern-day techniques. Through the stories of 6 farmers, we will explore a range of solutions that could have the potential to improve quality of life and transform the reality of the region. Most farmers in this region rely on a single crop for subsistence. Like Mangilal, who owns land in the plains, but barely made enough from his maize crop to feed his family. पहले हमको खेती का ऐसा कोई नॉलेज नहीं था. तंत्रज्ञान क्या चीज़ है, सुधारित पद्धति की खेती कैसे करने का हमको कोई नॉलेज नहीं था. Mitra showed Mangilal ways to improve his yield. He was exposed to better quality seeds, seed treatment methods, sowing and fertilization techniques, and the proper use of pesticides. They opened a knowledge passage where farmers could share information and learn from each other. पहले मैं खेती करता था. 5 एकड़ में कम से कम साल में 30-40 हज़ार रुपये उत्पन्न होता था. मगर आज 2 एकड़ है मक्का, तो मक्की से मुझे कम से कम 70,000 रुपये उत्पन्न आएगा. They also introduced alternate income streams to increase security. In Mangilal's case, through floriculture, growing jasmine and roses. गुलाब से मुझे हर महीने 8,000 रुपये उत्पन्न आता है. वो ऐसा वार्षिक उत्पन्न हमारा 2 लाख से ऊपर है. But what solution could work for Bhutribai Gunjaria Padavi, who lives in the parched hills, where the infertile land offered few cultivation choices? To counter these limitations of the landscape, Mitra came up with the idea of orchard development or wadi. कैशू का यील्ड जो है लगभग फरवरी और मार्च में आता है और आपका मैंगो का यील्ड जो है अप्रैल और मई में आता है. तो इनका जो मेजर माइग्रेशन पीरियड है उसको भी एक चेक मिल सके और देन उनका जो लैंड जो है जो थोड़ा सा डिल्यूटिंग है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके. दैट्स पॉइंट ऑफ व्यू हमने यहाँ पे वाडी का इंट्रोडक्शन किया. और Mitra also encouraged Bhutribai and the other women in the area to form self-help groups and take the development and sustenance of orchards into their own hands. वाले आवले ना मदत कोली ना हो आई गांव में ना हम भी समझाड़ लिए आगड़ी आखे मिलित ना गोट तैयार कर लिए आखे समझित को इतना चलते हैं कि हाँ खा मदद को. The group gave these women the strength to address a host of livelihood interventions, as well as other community issues like health and hygiene. But both crop improvement and wadi are possible only with access to water. So what would Nirmala Sitaram Raut do, living on the steep slopes where water is scarce? पहिल्यांदा इथं पाणी डायरेक्ट वाहून जात होतं नदीमध्ये. इथे रुकत नव्हतं आणि रुकत न असल्यामुळे इकडचे जे काय लोक पिकं हिवाळी घेत नव्हते. Mitra worked at improvising the traditional water channeling technique of using natural contours for irrigation. They built permanent and temporary dams and mobilized women groups to collectively invest in water pipes, bringing the life-giving element to homes across this area.
आज की डेट में लगभग 50 साइट हमने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से सपोर्ट किया है और उसमें से लगभग 1500 एकड़ के आसपास एरिया जो है आज विदाउट एनर्जी इरिगेट हो रहा है. आणि 4 एकर 5 एकरपर्यंत लोक आता काही म्हणजे वेगवेगळ्या पद्धतीने पिके घेत आहे. With few livelihood options, the villagers from Umargaon were often forced to migrate to Gujarat for 8 to 10 months a year in search of work. So Mitra came up with the idea of livestock development in the hope that it could help the lives of landless farmers like Nitesh Pawara. काम कर कर के मैंने एक गाय ली थी और वो गाय जन गई तो उसका दूध 2.5 किलो दूध निकलता था. They convinced him to crossbreed his desi cow with elite breeds using artificial insemination. This simple technique changed many things. It brought down the age of the first calving, reduced the intercalving period, and increased milk production. वो बछड़ी 18 महीने में बहुत बढ़िया हो गई तो उसका दूध सुबह में 6.5 तो शाम को 7 लीटर एक टाइम को इतना दूध देती थी. To ensure sustained change, Mitra needed to set up avenues for the farmers to sell the milk. And so, they joined hands with the Vasundhara Milk Cooperative and started a collection and storage facility, bringing a viable market right within the bounds of Umargaon. Members of the community, like Nitesh, were trained to run and manage each aspect of this enterprise independently. Today, most inhabitants of Umargaon need not look for livelihood options outside the village. Almost every house has a crossbreed cow and contributes milk to the cooperative on a daily basis, earning a collective annual income of up to 3 crores. Mitra decided to broaden their livestock intervention to include goats. This changed the life of farmers like Aap Singh Emmanuel Pawara, who lived in the uplands. He was able to take up animal husbandry full-time by crossbreeding his local goats with the pure Osmani Badi buck. त्या बकऱ्यांना काहीच म्हणजे आजार बी येत नाही. उन्हामध्ये बी फिरतात ते, थंडी पावसाळा कसं बी राहिलं सगळं हवामान त्यांना सहन आहे. जो बकरा आम्ही एका वर्षात विकतो तो बकरा आता आम्ही 6 महिन्यात बी विकायला गेलो तरी रेट चांगलंच भेटतो आम्हाला. एवढं फरक आहे त्याच्यात. To improve market linkages, Mitra also gave the farmers a weighing scale so they could negotiate prices for the goats according to their weight. हर एक फार्मर अभी वहाँ पे वो वे करके बेचता है. सो एक फार्मर को लगभग उसका अगर 1500 रुपये मिल रहा था आज के डेट में उसको 2500 रुपये भी मिलता है. The lives of tribal people, their livelihood and culture is naturally linked to the forest. This premise prompted Mitra to work with farmers like Narsingh to reforest the area around his village. कम्युनिटी प्लांटेशन के अंदर में जैसा हमने बचत गट का जो मीटिंग लिया उसके अंदर में फिर कुछ इसे पेड़ लगाने के लिए वाइफ ने हमको मार्गदर्शन किया. तो फिर इसमें क्या क्या हमको उगाना है, खड्डे कितने दिन खोदना है, वो हमने प्रयास किया. Today, with the collective efforts of men and women of the village, they have been able to reforest close to 1,500 acres of once barren land. Six farmers, 6 families transformed. आज मेरे पास में ऐसे समझो मोटरसाइकिल भी है और 10 गाय मिल गए और लड़का इंजीनियर कॉलेज में पैसे देने के लिए भी पैसे है मेरे पास में. इतनी हिम्मत आ गई मेरे पास में. आता यांनी जर मार्गदर्शन दाखवलं नसतं तर आमच्याकडे जे काही वृक्ष लागवड आजपर्यंत केलं नसतं. पण यांनी जे काही मार्गदर्शन आम्हाला दाखवलं त्याचप्रमाणे आम्ही वृक्ष लागवड केलं. वाइफ मित्र वाला मुदत को ये तहामा को में भी हाजो साल है हाजो ये अना बिहरा को में भी गांव में है
For Nandurbar, the change has started. Over the next few years, Mitra, in partnership with Cine, will scale up these initiatives, build community institutions, and increase capacity with the aim of creating similar change across the central Indian tribal belt.